नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली के बारे में। दिल्ली, दिल वालों का शहर दिल्ली। कौन नहीं जानता दिल्ली के बारे में। लेकिन मैंने ट्राई किया है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊं जो शायद आपको ना पता हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पहले से ही पता थे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते ही बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज दिल्ली रिकॉग्नाइज्ड एज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शंस आर ए 1991, बी 1956, सी 1947 या फिर डी 1949। एंड द करेक्ट आंसर इज बी 1956। The Constitution Act 1991 declared the Union Territory of Delhi to be formally known as the National Capital Territory of Delhi. In the colonial period in 1911, the British shifted their capital from Calcutta to Delhi. आपको बता दूं कि this act gave Delhi its legislative assembly. Coming on to question number 2, who is the current LG, Lieutenant Governor of Delhi? And the options are A, Shri Anil Baijal, B, Dr. Tamilisai Soundaranjan, C, Shri Devendra Kumar Joshi या फिर D, Shri Radha Krishna Mathur. The correct answer is A, Shri Anil Baijal. He is the 21st LG of Delhi. He took over office on 31st December 2016 after the sudden resignation of Najib Jung. जैसे कि सबको पता है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल है आम आदमी पार्टी से और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी से। यहाँ का लेजिस्लेटिव यूनिकैमरल है विद 70 सीट्स। राज्यसभा के 3 सीट्स हैं और लोकसभा के 7 सीट्स हैं। Question number 3, which king built the first city of Delhi? And the options are A, Tilandev, B, Kumar Pala, C, Prithviraj Chauhan या फिर D, Anangpal Tomar. The correct answer is D, Anangpal Tomar. The first city of Delhi was Lal Kot, built by King Anangpal, who was a ruler of Tomar dynasty. लाल कोट का नाम फिर चेंज करके किला राय पिथौरा कर दिया गया बाय पृथ्वीराज चौहान when he conquered Delhi in 1178 AD. Siri is the second city of Delhi which was established by Alauddin Khilji. Coming on to question number 4, who was the key architect of New Delhi? न्यू दिल्ली को डिजाइन किसने किया था? ऑप्शंस है ए, ले कॉर्बुजियर, बी, जेम्स होबन, सी, एडविन लुटियंस या फिर डी, विलियम एमर्सन. And the correct answer is C, Edwin Lutyens. Sir Edwin Lutyens was a British architect who collaborated with Herbert Baker and designed New Delhi. Lutyens Delhi is an area in New Delhi named in his honor. बता दूं कि दिल्ली is the largest city in India and currently the second most populated city in the world. First rank पर Tokyo है. Tokyo is the most populated city in the world. Coming on to question number 5, who is the founder of Sulabh International Museum of Toilets? Options are A, Dr. Bindeshwar Pathak, B, Shri O.P. Jain, C, Shri Hakim Abdul Hamid या फिर D, Shrimati Kiran Nadar. The correct answer is A, Dr. Bindeshwar Pathak. It was established in 1992. The museum has exhibits from 50 countries. Dr. Bindeshwar Pathak is also the founder of Sulabh Sanitation and Social Reform Movement. His objective in establishing this museum was to highlight the need to address the problems of the sanitation sector in the country, considering the efforts made in various parts of the world in this field since the 3rd millennium BC. बता दूं कि टाइम्स मैगजीन ने इस म्यूजियम को वन ऑफ द वियर्डेस्ट म्यूजियम का करार दिया है. Coming on to question number 6, which of the following is the official tree of Delhi? And the options are A, chinar, B, mango tree, C, sandalwood या फिर D, gulmohar. The correct answer is D, gulmohar. Official animal nilgai, official bird house sparrow, official flower alfalfa. Khari Bauli. दोस्तों खरी बावली is the Asia's largest spice market located in Delhi. The Delhi metro station stands in 13th position in the world. The length of the station is 193 kilometers. Do remember this data. This is very important. Coming on to question number 7, who is the designer of Lotus Temple?
ऑप्शंस आर ए मीर मोहम्मद अस्त्राबादी, बी फरीबोर सहबा, सी उस्ताद अहमद लाहौरी या फिर डी मेमर सिनन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी फरीबोर सहबा। फरीबोर सहबा was an Iranian architect. It was opened to the public in December 1986. This temple has no idols of any god. It is the only Baha'i temple of worship in Asia. पूरे एशिया में लोटस टेम्पल के अलावा और कोई बहाई टेम्पल नहीं है। Now, what is Baha'ism? Baha'ism is a religion is recognized as a combination of 9 great religions of the world and traces its genesis to the Prophet Baha'u'llah. Now, what I mean by great religions is the most widely spread religions. Each and every religion is great. The meaning of great here is the most widely spread religions. Coming on to question number 8, what is the literacy rate of Delhi according to 2011 census? The options are A 80.56%, B 93.43%, C 86.21% या फिर D 75.35%. The answer is C 86.21%. 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मेल लिटरेसी रेट इज 90.94%, फीमेल लिटरेसी रेट इज 80.76%. वही पॉपुलेशन डेंसिटी है 11,320 persons per square kilometer, such a large number, and that's why it is the second most populated city in the world. Sex ratio 868 females per 1,000 males, which is a very less number. You can see guys, despite a very good percentage of literacy rate, there's a very less number of sex ratio. So this says that literacy rate, being literate, doesn't really mean that we have equal gender equality everywhere. Question number 9, the Delhi Flying Club was based on which airport? Options are A Indira Gandhi International Airport, B Safdarjung Airport, C Hindon Domestic Airport या फिर D पालम एयरपोर्ट। दोस्तों इसका आंसर है बी सफदारजंग एयरपोर्ट। द दिल्ली फ्लाइंग क्लब वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1928 with 2 de Havilland Moth aircraft named दिल्ली एंड रोशनारा। नाउ रोशनारा जो है वो शाहजहां की बेटी का नाम है। सफदारजंग एयरपोर्ट स्टार्टेड ऑपरेशंस इन 1929। बता दूं कि उस समय में दिल्ली ओनली एयरपोर्ट हुआ करता था और सेकंड इन दिल्ली इन इंडिया। The airport functioned until 2001. In January 2002, the government closed the airport for flying activities because of security concerns following the New York attacks in September 2001. Coming on to question number 10, which of the following is the most famous embroidery of Delhi? The options are A. Kantha embroidery, B. Kutch embroidery, C. Kashida embroidery या फिर D. Zari Zardozi embroidery. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है डी जरी जरदोजी एम्ब्रॉयडरी। जरदोजी जो वर्ड है वो पर्शियन वर्ड है, वो पर्शियन वर्ड से डिराइव किया गया है और जो दो वर्ड है वो है जरिन मीनिंग गोल्ड और दोजी मीनिंग सीविंग। तो जरी और दोजी मिला के जरदोजी। इट प्रॉस्पर्ड ड्यूरिंग द 17th century during the reign of the Mughal Emperor Akbar. Question number 11, in which stadium was the opening ceremony of 2010 Commonwealth Games held? The options are A. Jawaharlal Nehru Stadium, B. Arun Jaitley Stadium, C. Ambedkar Stadium या फिर D. Major Dhyanchand National Stadium. And the correct answer is A. Jawaharlal Nehru Stadium. दोस्तों 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स था ये वही गेम है जहां पर गीता फोगाट ने गोल्ड जीता था इंडिया के लिए, और ना सिर्फ गीता फोगाट बल्कि बाकी एथलीट्स भी गोल्ड जीते। फॉर एग्जाम्पल मनोज कुमार, उन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता था। दिल्ली hosted the 19th Commonwealth Games in 2010, which ran from 3rd to 14th October and was the largest sporting event in India. The ceremony featured over 8,000 performers and lasted for 2.5 hours. Delhi hosted the first Asian Games in 1951, wherein 489 athletes participated. मतलब एशियन गेम जो फर्स्ट एशियन गेम्स था वो दिल्ली में होस्ट किया गया था। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, हु कंस्ट्रक्टेड जंतर मंतर? ऑप्शंस आर ए महाराजा ईश्वरी सिंह, बी महाराजा पृथ्वी सिंह 1, सी महाराजा जय सिंह 2 या फिर डी महाराजा जगत सिंह।
इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, महाराजा जय सिंह 2। जंतर मंतर is an observatory constructed by Maharaja Jai Singh of Jaipur in 1724. अब महाराजा जय सिंह 2 ने 5 जंतर मंतर बनवाए हैं इंडिया में टोटल। वो है न्यू दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में। The essential purpose of Jantar Mantar was to accumulate astronomical tables which in turn would help predict the time and movement of the celestial bodies, for example, moon, sun and many other stars also. Coming on to question number 13, who was the first Turkish Sultan of Delhi? Options are A. Altamash, B. Qutb al-Din Aibak, C. Razia Sultan या फिर D. Nasiruddin Mahmud। दोस्तों इसका आंसर है बी, कुतुब अल-दीन ऐबक। कुतुब अल-दीन ऐबक was a general of Muhammad Ghori and a founder of Mamluk dynasty। ममलुक डायनेस्टी मतलब स्लेव डायनेस्टी। अब स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है? बिकॉज कुतुब अल-दीन ऐबक was himself a slave और मोहम्मद घोरी ने उन्हें खरीदा था। अब कुतुब अल-दीन ऐबक के जो सन इन लॉ थे अल्तमश, वो भी एक स्लेव थे जिन्हें कुतुब अल-दीन ऐबक ने खरीदा था। He commissioned the construction of Qutub Minar, which was completed by his son-in-law Altamash। कुतुब मीनार उनकी बेटी के लिए बनाया गया था, उनका नाम था कुतुब बेगम। He died on 14th November 1210 at Lahore, Pakistan, and was buried at Anarkali Bazaar। Coming on to question number 14, which Mughal emperor built the 14 gates of Delhi by which it was once bound? Options are A. Aurangzeb, B. Akbar, सी जहांगीर या फिर डी शाहजहां। दोस्तों इसका आंसर है डी, शाहजहां। शाहजहां built the city of Shahjahanabad in the year 1639 which had 14 gates। Out of the 14, only 5 gates have survived till now and are functioning, and they are the Kashmere gate। Now you're wondering what's this Kashmere gate? It would be Kashmiri gate, no? तो ये कश्मीरी ही था, कश्मीरी गेट ही था, लेकिन एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने इसे मिसस्पेल्ड करके कश्मीरी कर दिया गया और बेसिकली तब से इसे करेक्ट नहीं किया गया है। वो नाम इट गॉट स्टक एंड द नेम इज द कश्मीरी गेट। So the Kashmiri gate, the Ajmeri gate, the Lahori gate, Delhi Darwaza or the Turkman gate। Now this Turkman gate got national fame due to the massacre of 1976, which is said to be India's closest reliving of Jallianwala Bagh massacre। Coming on to question number 15, what is the architecture of Swami Narayan Akshardham temple? And the options are A. Nagara architecture, B. Vesara architecture, C. Dravidian architecture या फिर D. Kalinga architecture। दोस्तों इसका आंसर है A. Nagara architecture। This temple holds the Guinness World Record as the world's largest comprehensive Hindu temple। It was constructed by Bochasanwasi Akshar Purushottam Swami Narayan Sanstha BAPS। The temple was officially opened on 6th November 2005 by Pramukh Swami Maharaj। So guys, this was all from my side and I hope आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। नमस्कार।